मैम आप कनेक्ट हो रहे हैं? हाँ हाँ बोलिए। अच्छा आप ये कर दीजिएगा। मैम, ये आप क्लोज कर दीजिएगा। हेलो। हम हम कह रहे थे कि आप क्लोज कर दीजिएगा। बताइए 23, 24, 25, 26। Sir, I'm not able to switch on my video. Please switch on. But you You're are able to see my video? no, not yet. That's what I'm saying, sir. I'm not able to switch on my video. I don't know why. You do one thing. You please leave once and then rejoin. Okay, 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 okay.
for the school. Try, ma'am, switching your camera on. Can you hear me, Mitali ma'am? Good evening, all of you. I hope you're able to hear me. Yeah, your voice is clear, but your video. But I don't know what's wrong with my You try once video. with sharing your PPT. Yes, I am just trying to do that. I'm trying to share my PPT. Just let me know if it's visible. Okay.
Is my PPT visible? Yeah, PPT is visible. Okay. So I think Okay. today the audience does not want to see me. There is some problem. They may mitigate with your inconvenience. Okay, can we start? Yeah. Ma'am, is there, So, Mitali ma'am, is there any Ah. F8 key on your keyboard? Effect. Effect तो नहीं दिख रहा है मैम, but there's something which is like sunshine. no, effect should be there. Function key, function. Function key. फंक्शन की मैम F. कैमरा के ऑफ के लिए भी एक फंक्शन की होता है, मे बी वही दबा हो. F तो कुछ दबा हुआ नहीं है मैम. कौन सा होता है मैम उसका? सबसे ऊपर फंक्शनल कीज तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन की? F8. F8. Yeah. नहीं हो रहा. प्रोजेक्ट तो आ रहा है, लेकिन Anyways, so anyway today they on behalf don't. of Aryabhatta God. Sahodaya School Complex, I welcome all the participants and our resource person, Mitali Mukherjee ma'am, who is here with the new topic. And we hope this learning will be impactful for our teachers in the classes. And will now, without delaying, I am requesting the resource person Mitali ma'am to please start the session. Sure. Thank you so much, Himanshu sir. Thank you, Aryabhat Sahodaya, for giving me this wonderful opportunity to interact with you all again with a new topic. Very interesting topic, very, very core topic for teachers. You know, when we look at this topic, there's nothing new. We feel it's a very old topic. People have been talking about it such a lot. But when it comes to classroom teaching, we ignore this completely. So today I'm going to try and give you some ideas how you can incorporate multiple intelligences into your classroom teaching. So this would be my basic aim. And moreover, you know, many people feel that it's very difficult, it's very expensive to do multiple intelligence test, bring it to the class, actually do it. But it's not at all like this. It is a very simple concept, very natural concept, very practical concept, rather, I would say. And if you use multiple intelligences theory in your day-to-day classroom, I'm sure you'll find a lot of changes happening in the students' learning. So please cooperate with me today. I don't know why my video is not working. Although I've tried as much as I could through my little knowledge of computers, but I've not been very successful into it. So today you have to manage without my video, but I'm happy that my PPT is visible. So thank you once again, Aryabhat Sahodaya, Himanshu sir, and my very, very dear friend, Simple ma'am, for helping me out also, but I could not avail that help. I'm sorry about it. So today we're going to study multiple intelligences. Now, the very first question that comes to our mind is, what is intelligence? If we don't understand intelligence, then we will not be able to understand multiple intelligence as well. So the question is, what is intelligence? Anyone through the chat box, can you please share what you understand by intelligence? Anyone in the chat box, if you can please share what is the meaning of intelligence? What do you understand by the word intelligence? Anyone? What is intelligence? I've not yet got any response in the chat box. What is intelligence? Teachers, you don't need to write your name and your school and good evening and all, because that is of no use. Once you fill that form, only then you'll get the certificate. So you can avoid all this. You know, there are just pop-ups on the screen, and I think the others get disturbed. Learning new things, very good. At just any field, smart learning, okay?
Some answers have started popping up. So we expect some more answers. What is intelligent? You know, this is our very common saying. हम किसी भी बच्चे को sharp mind, they're saying sharp mind. Very good. Awareness. Very good. These new words are coming up. Good in completing the work. Very good. Thank you so much. Thank you so much, dear educators, for your wonderful responses. But, you know, I am very sudden creativity, somebody is saying. But I would just like to tell you here that I beg to differ a little. Actually, if you read more about intelligence, you will feel that intelligence means a capability to learn. What is your capability? What is your learning speed? How much you can learn in a given interval of time? That defines your intelligence. Now, very simple example. Suppose I'm a woman. I'm expected to know to cook, isn't it? All women in this world are expected to know to cook. I'm not being gender biased, but I'm telling you what really is happening in our society. Chalo, all boys are also expected to learn to cook, because learning to cook is learning to be sustainable. We should learn how we can make ourselves sustainable. Now, suppose you have never cooked in your home. Before marriage, you have never cooked. But you've observed your mother cooking or your help cooking. Now, when you observe them, and then when you get married, suppose, imagine a scenario that you are an unmarried person, you have never cooked. Now, after marriage, whether you're a boy or a girl, you're expected to do some cooking. Or when you go to the hostel, you're expected to do some cooking. Or when you were a bachelor from your family, then you were expected to do cooking. Suppose the scenario is like this. Now, what happens is you try to recall. अच्छा मम्मी ऐसे करती थी, वो ऐसे करती थी, इसके बाद ये डालता था, उसके बाद वो होता था, and you cook something. Now, there are some people who will pass in the first attempt itself. There are some who will not pass in the first attempt. First time, maybe they'll burn. Second time, maybe they will do something wrong in the process. Third time, maybe they put the wrong masalas. Maybe the fourth time or the fifth time, they gradually become successful in cooking. Are you getting my point? Now, let us define intelligence as per this example. The people who did cooking, successful cooking, eatable cooking in the first attempt, they are intelligent people. And the people who did it in the second attempt are less intelligent. Third attempt, lesser intelligent. Fourth attempt, lesser intelligent. Are you understanding what I'm trying to say? So intelligence is the capacity to learn. लेकिन अब आप कहेंगे मैम अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन, जिसने तीसरे बार में बनाया, चौथे बार में बनाया, पांचवें बार में बनाया, वो तो भोंदूराम है, वो तो बुद्धू है, वो तो अनइंटेलिजेंट है. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. आज आपके इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए मैं ये छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूं. दैट इज मल्टीपल इंटेलिजेंस. मे बी मिताली मुखर्जी इज सीइंग हर मदर कुकिंग, and in the first instant she is able to pick up everything and produce the same dish, almost equivalent in taste. So is Mitali Mukherjee very intelligent and all others fools? It's absolutely not like this, my dear friends. Maybe Mitali has been successful in cooking, but suppose I watch Sunil Gavaskar or I watch Sachin Tendulkar play cricket, fine? Now, does that mean I should start playing cricket like him? Only then I'm intelligent. Isn't this a valid question? मैंने माँ को खाना बनाते देखा, मैंने कॉपी किया, मैं खाना बना ली, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ. लेकिन मैं इतने सालों से सचिन तेंदुलकर को भी तो बैटिंग करते देख रही हूँ, तो मैं उनको देखकर या सचिन तेंदुलकर के पास सीख कर पर्सनली भी उनके जैसा क्यों नहीं बन पा रही हूँ? इसका मतलब क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ? So intelligence is of course the capacity to learn, my dear friends, but learn what is a very, very important point. Learn what? I am very, very, very intelligent in observation. So I observe and learn how to cook. That means my cooking intelligence is good. But at the same time, my cricket intelligence is not so good. So you have to understand that if you want every 40 children in your class to learn something, your method of teaching has to be as per their active intelligences. Means there is one child
who can listen to you for 40 minutes and learn a lot. But at the same time, there's another child who is equally concentrating and listening to you for 40 minutes, but he's not able to learn so much. That doesn't mean कि ये बच्चा भोंदू है, वो बच्चा intelligent है. It simply means that if you want the second child to learn something, you have to use another method, another process. Why? Because उसकी intelligence अलग type की है, इसकी इंटेलिजेंस अलग टाइप की है, तीसरे बच्चे की इंटेलिजेंस अलग टाइप की है. मतलब आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो ओवरऑल यू कैन डिवाइड इट बाय 8 और एक इंटेलिजेंट टाइप में ऑलमोस्ट उतने बच्चे आते हैं. वहां भी 100% सिमिलैरिटी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीचर? So what is expected from the teacher is that the teacher has to teach in multiple ways, which hits the intelligence type of every child in your class and the child is able to learn. For example, मैं आपको समझा रही हूँ, it is very easy, it's not very difficult. जैसे अगर कोई बच्चा प्री प्राइमरी में है, अगर आप में से कोई प्री प्राइमरी के टीचर हैं या एटलीस्ट देखा है कभी प्री प्राइमरी में टीचिंग, तो आप देखते हैं प्री प्राइमरी के टीचर्स पिक्चर्स से पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, उसके बाद वो गाना भी गाना लगते हैं क्लास में, वो दे सिंग द राइम्स एंड मेक द चिल्ड्रन सिंग. उसके बाद वो एक्टिविटी रूम में ले जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं कोई कोई चीज, ये देखो ये ऐसे बजता है, वो ऐसे होता है, ये ऐसे फोटो है, इसको ऐसे सेट करते हैं. मतलब दे आर डूइंग काइनेस्थेटिक्स ऑल्सो. तो जो बच्चा पिक्चर से नहीं समझा वो साउंड से समझेगा, साउंड से नहीं समझा वो म्यूजिक से समझेगा, म्यूजिक से नहीं समझा डांस से समझेगा, डांस से नहीं समझा एक्टिविटी से समझेगा. This is what is expected even in class 12. But the problem is, my dear teachers, that the moment the child enters into class 1, 2, हम समझने लगते हैं तो बड़ा हो गया मेरा बच्चा, गाना गाने की जरूरत नहीं है. अगर आप कल कोई सी क्लास 12 के क्लास में किसी टीचर को गाना गाते सुनेंगे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? Can anybody put up in the chat box please? क्लास 12 के मैथ्स क्लास में प्रिंसिपल राउंड पे है और वो सुनती है या सुनता है कि टीचर इज सिंगिंग अ सॉन्ग. व्हाट विल बी द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द प्रिंसिपल? नॉर्मल रिएक्शन, मल्टीपल इंटेलिजेंस पढ़ने के बाद वाला रिएक्शन नहीं. नॉर्मली एक प्रिंसिपल का या एक दूसरे कलीग का क्या रिएक्शन होगा? उस क्लास 12 में क्या हो रहा है? एनीवन हु कैन गिव मी दैट रिएक्शन इन द चैट बॉक्स? एंगर, गुस्सा आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. एंग्री, आप गुस्सा हो जाओगे. सरप्राइज, वेरी ट्रू. अरे क्या हो गया मेरे टीचर को? कहीं मेरा टीचर आउट ऑफ द माइंड तो नहीं हो गया? मे बी द फर्स्ट रिएक्शन, अरे व्हाट्स हैपनिंग इन क्लास 12? आर दे प्लेइंग अंताक्षरी? अगर मैं प्रिंसिपल हूं और मैं राउंड पे हूं तो मैं क्या बोलूंगी? आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग अंताक्षरी इन योर क्लास सर या मैम? मे बी, बट एक्चुअली that is the right way to teach. Why? Because if we study the theory of Howard Gardner, he says that we can distribute children or any person, not only children, people, into 8 types of intelligences. 8 types of intelligence. किसी बच्चे में 8 type of intelligence का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ उसी टाइप से पढ़ सकता है, नहीं, वो दूसरे टाइप से भी पढ़ सकता है, लेकिन वो टाइप उसमें प्रोमिनेंट है. ये कौन से इंटेलिजेंस टाइप से? म्यूजिकल, किनेस्थेटिक्स, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिकल, नेचुरलिस्ट, इंट्रापर्सनल एंड विजुअल. मैं समझाऊंगी आपको एक एक करके. तो जो म्यूजिकल बच्चा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल से कुछ नहीं समझ सकता. वो समझ सकता है, लेकिन म्यूजिक से सबसे ज्यादा समझ सकता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चैट आया चैट बॉक्स में, somebody saying, will if I'm the colleague I will go and complain to the principal कि क्लास 12 में गाना चल रहा है. Very good, very good. Actually, because we are not accustomed to this type of teaching in the higher classes. Leave aside higher classes, not even in class 1, 2, I think most of the schools. So my dear teachers, from now onwards, please change your mindset and remember, intelligence is not only IQ. Intelligence does not mean how good the child is in maths, how good the child is in physics. Intelligence means how early, how fast my child can learn in the class. जैसे बहुत समय हम एक चीज समझाते हैं क्लास में, कुछ बच्चे तुरंत पिकअप कर लेते हैं, कुछ बच्चों के लिए दोबारा समझाना पड़ता है, कुछ के लिए तिबारा समझाना पड़ता है, कुछ फिर भी नहीं समझते, और एज अ टीचर हम लेबल कर देते हैं कि मेरे क्लास का बुद्धू बच्चा है. एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, कैन आई से वो लेबल रिवर्स होना चाहिए.
क्योंकि टीचर ने नहीं समझा कि उस बच्चे को मैं कैसे समझाना है। तो आज मैं अपने सारे टीचर्स को एनलाइटन करना चाहूंगी और ये बताना चाहूंगी कि हमारे क्लास में कोई बुद्धू बच्चा नहीं होता है। What happens is we as teachers we are not able to cater to the requirements of the child. For example, अगर मैं आपको अपने घर खाना खाने बुलाऊं तो मैं क्या करूंगी? मैं अगर मुझे नहीं पता है कि आप क्या खाते हैं तो मैं सोचूंगा अरे यार ये इंसान वेज है या नॉन वेज है, तो थोड़ा वेज की भी डिशेस रखूं, थोड़ा नॉन वेज की भी रखूं कि भूखा नहीं रहे। फिर मैं सोचूंगी अरे मैंने तो नॉन वेज में मछली बनाई है, पता नहीं इसे मछली पसंद है कि नहीं, तो चिकन भी रख लेती हूँ। Are you understanding what I'm trying to say? Same treatment you have to give to your students. Every child is not similar in the classroom. Every child cannot understand the same language, the same process, the same method. So different children need different kinds of teaching methodologies. So you have to teach the child according to the child's intelligence. So please remember that intelligence is not IQ. Intelligence is not how good you are in maths and physics. Intelligence is much more than that. I'll show you. Howard Gardner, wonderful, wonderful person with a wonderful theory. He is a person. He's the father of multiple intelligences. He created the multiple intelligence theory and said that at least 7 types are there, but of course there are more, many more, okay? But broad classification is 7 or 8 types. So what is multiple intelligence? It refers to a theory describing the different ways students learn and acquire information. So every child cannot acquire and learn by your lecture method. Every child cannot acquire and learn by your activity. Every child cannot acquire and learn through music. Every child is different. So you have to present a range of methods to cater to the requirements of every child. So first question is, how do I know the intelligence type of my students? Very easy. See, we are very fast approaching towards the new session. So I will suggest that you must Google a little. And of course, because every educator is different, I would suggest that when you Google and write multiple intelligences test for school children, you know, so many links will open. You click on any link, whatever suits you, you will find there are multiple choice questions. When you give those multiple choice questions to your students, they pick the best answer as per their intelligence level. Please note here that no answer is right and no answer is wrong. All answers are correct here. Now होता क्या है कि वो बच्चों से पेपर ले लीजिए, उसके नीचे में एक स्केल दिया हुआ रहता है कि 1 means these many marks, 2 if the child is selected, 2 means this many points, 3 means this many points, 4 means this many points. आप बच्चे को पॉइंट दीजिए, सम का टोटलिंग करिए। वो नीचे ये भी बताता है कि इतने से इतने का मतलब हुआ। Am I audible? Am I audible? Okay. इतने से इतने का मतलब हुआ। Okay, okay. इतने से इतने का मतलब हुआ बच्चा इज म्यूजिकल, इतने से इतने का मतलब हुआ बच्चा इज इंटरपर्सनल, इतने से इतने का मतलब हुआ बच्चा इज दिस। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो दिया हुआ है, उसी से आपको पता चल जाएगा व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड यू हैव इन द क्लास। अब आपकी इच्छा, आप उसको जैसे करो। ये कुछ नेम्स मैंने सजेस्ट किए यहाँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर आपको जरूरत हो तो यू कैन रेफर टू देम आल्सो। दीज आर सम ऑफ टेस्ट, IQ tests. Now, very strongly, since my Himanshu sir, dear friend of mine, is from the physics background, he always, tells physics people are very intelligent. Just joking, he's not like that. But still, I'll tell you, our major perception is that physics, maths में जो तेज बच्चे होते हैं, वही आपके intelligent बच्चे हैं। लेकिन ये जो डेटा आपके स्क्रीन के सामने अभी आपको हैरान कर देगा, that Shakira, singer Shakira, the IQ is 140. Sharon Stone, she's an actress, nothing to do with maths and physics, IQ 154. Mathematician, IQ 170. Stephen Hawking's physicist, IQ is 160. So just Stephen Hawking's 160, but these people, see where they are, higher or very close. So ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज अपने दिमाग से बात बिल्कुल निकाल कर फेंक दीजिए बाहर। that mathematics and physics people are more intelligent. आपके एक स्कूल में भी पेरेंट्स आते हैं ना, वो हमेशा ये कहते हैं मेरा बच्चा मैथ्स में नहीं अच्छा, मैम जीवन में क्या करेगा मैथ्स नहीं करेगा। तो स्कूल का हॉट सब्जेक्ट होता है मैथ्स एंड फिजिक्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मे बी द चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिकल फिजिक्स, चाइल्ड इज नॉट एन एनालिटिकल लॉजिकल चाइल्ड, द चाइल्ड इज अ म्यूजिकल चाइल्ड, वो म्यूजिक में अच्छा करेगा।
अगर हम लोग लता मंगेशकर जी का IQ टेस्ट करते हैं मैथ्स एंड फिजिक्स के बेसिस पे, तो आप सोचिए उनको कितने नंबर आते हैं. So every child is different, every child's treatment is different, every child's teaching methodology is different. What is multiple intelligence and why is it important? Multiple intelligence is important because it can draw students back to learning. मान लो आपके क्लास में एक नेचुरलिस्ट लर्नर है, मैं बताऊंगी क्या नेचुरलिस्ट लर्नर, और आप उसको पढ़ा रहे हैं किस मेथड से, लॉजिकल मेथड से. आप हर चीज का लॉजिक देकर उसको समझा रहे हो. बच्चा बेचारा नेचुरलिस्ट है, वो पढ़ेगा ही नहीं, या तो वो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगा या वो क्लास में फेल करेगा. But if the teacher is enlightened and the teacher knows about multiple intelligence, now the teacher will start teaching this child as per you should teach a naturalist child. So what will happen? The child who is drawn away from learning will gradually be interested, and the child will come back to learn. Next, plus remember that natural intelligence caters to the requirements of diverse learners and gives everyone a chance to succeed at learning. Is it clear? Next, why is it important that we know about Gardner's multiple intelligences theory? Number one, to understand the child. बच्चा कैसा है, मेरा बच्चा किस टाइप का लर्नर है, उसको समझने में काम आएगा. To understand yourself better, you should test your intelligence also. It will tell you what are your strengths. Suppose you find कि आप एक intrapersonal learner है. Now, what is the meaning of intrapersonal learner? अगर आपको पता है, you know your strengths. At the same time, you know your weakness also. And you can work on that because you're a teacher. Helps children choose career. I'll come to the next slides where I'll tell you what kind of intelligent people should choose what type of career. For example, if I would have become a singer, I would have become a horrible singer. I would have not earned a single penny. Okay, so my intelligence type was assessed and it told that if I go into administration, I will do well. So that is it. So you teachers have to behave like counselors now. And this is what NEP also reiterates. Next is help you choose your career and understand others better. वो बच्चा क्यों फेल कर रहा है, वो बच्चा क्यों क्लास में ड्रॉन नहीं है, वो बच्चा क्यों क्लास में चुपचाप बैठा रहता है, वो क्यों झगड़ा करता है, वो बच्चा शांत क्यों रहता है, वो बच्चा ज्यादा क्यों बोलता है. Every answer you will find if you know multiple intelligences. Is it clear? Now, what are the types of multiple intelligences? I've already told you: naturalist, spatial, linguistic, intrapersonal, interpersonal, logical, musical, and bodily kinesthetic. So logical is just any one kind of multiple intelligence, just like a musical or body kinesthetic person. So आपने जो पूरा ये बना कर रखा है ना ऑरा, फिजिक्स मैथ्स वाले ही अच्छे होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, ये एक कंप्लीट रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. Okay, next is it helps children learn holistically but develop different capacities and intelligences. जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर एक इंट्रापर्सनल बच्चा या इंटरपर्सनल बच्चा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लॉजिकल जीरो है, म्यूजिकल जीरो है, नेचुरल जीरो है. नहीं, वो वैसे भी सीख सकता है, लेकिन वो बेस्ट सीखता है when he is in own zone. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए केमिस्ट्री मास्टर्स. मैं केमिस्ट्री जितना अच्छा पढ़ा सकती हूँ उतना मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती हूँ. ठीक है, मैं इंग्लिश इज गुड, आई नो ग्रामर, आई स्पीक करेक्ट इंग्लिश, आई राइट करेक्ट इंग्लिश, आई एम गुड इन स्पेलिंग्स, एवरीथिंग इज ओके. बट मैं केमिस्ट्री पढ़ाने जब जाऊंगी तो मैं जितना फ्री, जितना हैप्पी फील करूंगी, जितना कंफर्टेबल रहूंगी इन माई जोन, उतना इंग्लिश में नहीं रहूंगी. दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, वेयर वी टीच द टीचर्स हाउ टू कस्टमाइज देयर इंस्ट्रक्शंस and deliver it in the class. Customization of instructions very important. Now let us try to understand that what are the different types of multiple intelligences. Visual spatial intelligence. Now what is the meaning of visual spatial intelligence? Visual spatial intelligence का मतलब है जो एक दिए हुए जगह को खूबसूरती से ऑर्गेनाइज कर सके, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कैसे सजाएं. कल सरस्वती पूजा थी, ओके, अब हम लोग सब सरस्वती की मूर्ति रख देंगे, पूजा कर देंगे, ठीक है, वेरी गुड, फूल माला चढ़ा देंगे. लेकिन अगर एक विजुअल स्पेशल बच्चा आएगा तो उसको आप एक जब एरिया दे दोगे, देखो बेटा मुझे यहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति रखनी है, वो पूरे एरिया को कैसे विजुअलाइज करके उसको प्रेजेंट करना है, this the child will be able to tell you and help you with. Okay, so that these children are able to visualize very well. वो विजुअलाइज कर सकते हैं. जैसे मेरे साथ क्या होता है ना, जब मैं अपने ड्राइंग रूम में या मैं अपने पूरे घर में कहीं भी मुझे मन करता है मैं इस अलमारी को यहाँ से वहां शिफ्ट कर दूं, ठीक है, मैं सोफा को इधर टर्न कर दूं. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
लेकिन होता क्या है, मैं आई एम सो पुअर इन विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, आई एम टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, जब मैं सोफा को ले जाती हूँ ना वहां, तब मुझे समझ में आता है अरे ये तो छोटा, ये जगह छोटी होगी इसके लिए. Are you understanding what I'm trying to say? So I have very poor visual spatial intelligence. लेकिन अगर एक इंटीरियर डिजाइनर से आप बात करें, वो आपको तुरंत बता देगा यहाँ ये सोफा टेका कि नहीं, वहां वो सोफा कैसा लगेगा, यहाँ से दरवाजा खुलेगा तो कैसा लगेगा, वहां से दरवाजा बंद होगा तो कैसा लगेगा, इसके साथ वो कलर कैसा जाएगा. सो विजुअली दे आर वेरी वेरी एडवांस विजुअली. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So they are very good in looking at maps, charts, pictures, videos, movies, etc. Now next is verbal linguistic. Verbal linguistic means they know how to use their words very well. I'm a verbal linguistic intelligent person. I know how to use my words. I have a command on language. I can use my language well. So these kind of people have got great auditory skills. They are good speakers and they think in words, not in pictures. मैं पिक्चर नहीं सोच सकती हूँ, मैं वर्ड सोचती हूँ. दैट इज द रीजन माय विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस इज पुअरली डिफाइंड. तो अगर आप मुझे विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस में कोई काम करने के लिए देंगे तो आई विल बी फेलियर मे बी. इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट इंटेलिजेंट. आई एम इंटेलिजेंट इन समथिंग एल्स. आई एम इंटेलिजेंट in linguistics. I'm intelligent in speaking. Are you getting my point? Next, I'm just telling you what are the types of intelligences first. Logical, mathematical. ये आप सबको पता है, आपका फेवरेट इंटेलिजेंस टाइप है. Those children who can logic, who can conceptualize, logic, number patterns, numerical patterns, connections, information, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ, linking कर सकते हैं. They are logical, mathematical people. They're very good in numbers. They're very good in logic. They're very good in reasoning. So जो लोग रीजनिंग में अच्छे होंगे, नंबर्स में अच्छे होंगे, लॉजिक में अच्छे होंगे, दे कैन व्हाट दे कैन बिकम, यू कैन अंडरस्टैंड. दे विल आस्क यू लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वहां जाते तो क्या होता, इसको वहां बैठाते तो क्या होता. सो मेनी क्वेश्चंस दे हैं. नेक्स्ट, bodily kinesthetic intelligence, one of the most beautiful kinds of intelligence. This is where this kind of people, they are very good in their body movements, very good. They have complete control of their body. They may be good gymnastic people, dancers, theater artists, sportsmen, because they have a perfect body coordination. They're very good in coordinating different parts of their body. Okay. Next, म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप गाना बहुत अच्छा गाएंगे. यू आर इंटेलिजेंट इन म्यूजिक. मे बी यू नो यू कैन अंडरस्टैंड म्यूजिक. यू कैन टेल अरे खराब गाना है, अच्छा गाना है, अच्छा म्यूजिक है, बुरा म्यूजिक है. मे बी यू आर नॉट अ गुड सिंगर, दैट डजंट मैटर. मे बी यू आर नॉट अ गुड प्लेयर, बट एट लीस्ट यू नो things are right or things are wrong. You can criticize music, you can appreciate music. Okay. So इसलिए जब इन बच्चों के साथ हम गाना गाते हैं तो इनको बहुत मजा आता है. They appreciate, so they learn. Are you understanding? It's not because they want to sing so they learn. They can appreciate your move and thus they're happy and thus they can learn very, very easily. Next is a lovely personal favorite. My personal favorite is interpersonal intelligence. And I think all of us, if we practice a little, we can all become intelligent interpersonally. Interpersonal intelligence means instead of asking questions from others, we flip the pages of books or Google and we try to find our answers ourselves. We believe in ourselves the most. Interpersonal people believe in themselves the most. They are not talkative people. They know how to think. They know how to feel. They will not talk to you, but they can feel your pulse. They can understand your moves. They can observe things. Without talking, they can really get deep inside. They can dive deep, okay? Intrapersonal, just the opposite. They'll keep on talking. And this is it does not mean they're talkative. It means they're able to understand others. आपके साथ कोई बात कर रहा है, आप जवाब दे रहे हो. कब जवाब दोगे? जब वो बंदा जो बात कर रहा है वो आपको अच्छा लगे, वो आपके मतलब की बात करे, आपको समझ के बात करे, तभी तो आप उसको जवाब दोगे ना. सो yes, I'm very sorry. I think I did that interpersonal को intrapersonal मैंने कर दिया. This is I'm talking about interpersonal. Just a minute. Interpersonal. Okay. होता ये है कि जो ये interpersonal वाले लोग होते हैं, they understand the feelings of others. So when they interpersonal I'm talking about, when they understand the feelings of others, they are very empathetic. They are very soft. They are very friendly. They are very matured to understand the other person's feelings. और फिर वो फीलिंग को महसूस करके आपसे बात करते हैं.
तो जब वो फीलिंग को महसूस करके आपसे बात करते हैं तो आपको भी बड़ा अच्छा लगता है, तो आप भी उनसे बात करते हैं। सो दोनों आदमी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। ये इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? इंटरपर्सनल मतलब आप खुद से बातें करते हैं, आपका इंटरनल अवेयरनेस लेवल बहुत हाई है, सेल्फ अवेयरनेस आपकी बहुत हाई है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपकी बहुत हाई है, आप अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, आप अपनी इमोशंस को समझ सकते हैं, आप अपने आप को जज कर सकते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस। आर यू गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट. So all these kind of intelligence makes up your multiple intelligences theory. Now, what are the benefits of multiple intelligences? As a teacher and learner, you realize that there are many ways to be smart. My child is not only smart because he is good in logic and analysis. My child is body smart. My child is music smart. My child is nature smart. My child is linguistic smart. My child is kinesthetic smart. There are so many types of smartness. All forms of intelligence are equally important. Students can focus on their strengths on work which enable them becoming experts in certain areas. आप सोचिए अगर क्लास 1 से आपको पता होगी ये बच्चे का इंटेलिजेंस टाइप क्या है, डिफॉल्ट इंटेलिजेंस टाइप क्या है, और अगर आप उसी तरीके से बच्चे को पढ़ाएं और उसी लाइन में बच्चे को जाने को कहे, तो he or she will never ever be unsuccessful. वो अगर अपनी इंटेलिजेंस टाइप के हिसाब से अपने करियर को चूज करे, अपने फील्ड को चूज करे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, चूंकि वो उसका इंटेलिजेंस टाइप है, डिफॉल्ट इंटेलिजेंस टाइप, वो कभी फेल करेगा ही नहीं. द चाइल्ड विल नेवर फेल. नाउ students may develop strong problem solving skills that can cause that which they can use in real life situations. जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में एक बच्चा है, उसको हमेशा मैथ्स में फेल कर जाता है और हमेशा पीटीएम में, अदर सब्जेक्ट्स में अच्छा कर रहा है, गाने में भी अच्छा है, क्रिकेट में भी अच्छा है, लेकिन मैथ्स में फेल कर रहा है, जिसकी वजह से हर पीटीएम में उसकी धज्जी उड़ती है, पेरेंट्स उसको डांटते हैं, टीचर उसको डांटते हैं, कोई उसको नहीं समझता दैट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. कोई नहीं समझता. सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए बिकॉज द चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल इन लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस. नाउ imagine you do multiple intelligence test in your class and you tell the child, beta, you are wonderful in music and nature and this and that. Your weak area is logical and mathematical intelligences. एक फायदा सबसे बड़ा क्या होगा ना, the teacher will try to teach the child as per the other intelligences type of the child. For example, आपको मैथ्स भी पढ़ाना होगा तो आप बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? अगर आपको मैथ्स भी पढ़ाना होगा तो आप गाना गाकर पढ़ाओगे, अगर वो म्यूजिकल बच्चा है. अगर आपको मैथ्स पढ़ाना होगा कुछ एक्टिविटी करके पढ़ाओगे, अगर वो काइनेस्थेटिक बच्चा है, तो धीरे धीरे एक तो उसकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, एंड नंबर 2 क्या होगा आपको पता है? बच्चा समझ जाएगा कि मैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस टाइप का नहीं हूं, इसलिए मेरा मैथ्स खराब होता है. मैं बुद्धू हूं इसलिए मेरा मैथ्स नहीं खराब होता. मैं बुद्धू नहीं हूं, मैं तेज हूं, लेकिन मैं मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मेरा सबड्यूड है. बिकॉज ऑफ दिस आई एम अ लिटिल पुअर इन मैथ्स. So the child will develop confidence, the child will understand himself or herself, awareness level will arise, and the child will do well in maths also eventually, because the teacher is teaching the child according to his or her intelligence type. Are you getting my point, all of you? Any confusion? Simple ma'am, you raised your hand, you want to say something? Simple ma'am, you raised your hand. No, ma'am, by mistake. By mistake. Now look at this teacher. This is a teacher which we all should become, and this is the teacher in a class where there are multiple intelligent type children. See, there is something drawn on the board also. She has given a globe also कि भाई देखो पढ़ो. There are some children who are doing group study. ये कौन से बच्चे? इंटरपर्सनल. एक बच्चा वहां क्या कर रहा है? ग्लोब देखकर पढ़ाई कर रहा है. इसका मतलब वो कैसा बच्चा है? वो इंट्रापर्सनल है, वो खुद से पढ़ना चाह रहा है, खुद से ग्लोब से स्टडी कर रही है, खुद से पढ़ रही है. एक बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, हो सकता है वो लॉजिकल हो. एक बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है. कुछ बच्चे वहां पे जो ड्राइंग देखकर ड्राइंग से कुछ कर रहे हैं. तो दिस इज हाउ वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. This is how, what is our expectation level? That don't use one method of teaching at a time. You have to use multiple methods of teaching at the same time. Thank you, Ritu ji. Thank you so much. Okay. So this is you. देखिए पहले आपको लग सकता है मिताली मैम इज टॉकिंग नॉनसेंस, ये बहुत मुश्किल है, 40 बच्चे को 40 तरीके से पढ़ाएंगे क्या? बट इट्स नॉट. ट्रस्ट मी, इट इज नॉट. Once you understand that मुझे सबको खाना खिलाना है, the task will become very easy and gradually you will master it. Now,
people can have varying levels of intelligence and they can change over time. This is a wonderful statement. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा म्यूजिकल इंटेलिजेंस आज बहुत कम है तो कल भी कम रहेगा, धीरे धीरे एक लेवल पे आएगा. लेकिन एक चीज जरूर है, एक बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंस टाइप होता है, वो हमेशा हावी रहेगा आपके ऊपर. ठीक है. अब जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं कितना भी गुस्सा अपना काम करूं, लेकिन सिचुएशन अगर कुछ गड़बड़ाए तो मुझे सबसे पहले गुस्सा ही आएगा, क्योंकि वो मेरा डिफॉल्ट नेचर है. Are you understanding what I'm trying to say? हो सकता है वेरी पोलाइट, I'm very smiley, और मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ, वेरी गुड, मैं हम्बल हूँ, पोलाइट हूँ, सब कुछ है. लेकिन अगर सिचुएशन नेगेटिव हुआ तो मेरा सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर उभर कर आएगा? जो मेरा नेचुरल कैरेक्टर है. सेम इज द थिंग फॉर मल्टीपल इंटेलिजेंस. बट रिमेंबर, you can help the children by customizing your lessons, classroom layouts, and assignments. Please, whenever you're preparing a lesson plan, whenever you're preparing assignments, when you're preparing questions, keep into account all kinds of children. And then you prepare something which caters to the requirements of every child. मैं बार-बार ये कह रही हूँ, caters to the requirement of every child, caters to the requirement of every child. That is very, very important. Now, हम लोग इसको थोड़ा सा अलग टर्मिनोलॉजी भी कभी-कभी यूज करते हैं. Linguistic intelligence people are known as word smart. Logical mathematical people are known as number or reasoning smart. Visual spatial are known as picture smart. Bodily kinesthetic are known as body smart. Musical are known as music smart. Interpersonal people smart. Intrapersonal self smart. And naturalist are nature smart. Okay. अभी थोड़ा सा आपको बता दूं, नेचुरलिस्ट लगता है मैंने आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा नेचुरलिस्ट के बारे में आपको बता दूं. These are children who love nature. अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश का चैप्टर पढ़ाना है, अगर आप उनको गार्डन में ले जाकर पढ़ाए, वो सबसे अच्छा सीखते हैं. मैं नेचर लवर का मतलब ये नहीं कि आप अपने सिलेबस को चेंज कर दीजिए, आप कभी कभी बच्चों को आउटडोर भी ले जाइए कि नेचुरलिस्ट बच्चों को भी मजा आए. दे आर नेचर लवर्स. अगर आप अपने क्लासरूम में एक छोटा सा प्लांट रख दें, so you know those naturalist children, they will be attracted towards the class only because of the plant. जैसे you know, अगर मुझे किसी की शादी में जाना होता है तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ मछली खिलाएंगे यार. उस मछली की वजह से I take all the pain of dressing up, getting up, going so far, giving a gift, सिर्फ किस लिए? एक मछली की लालच में. Similarly, अगर आप अपने क्लासरूम में एक पौधा रख दें, उस पौधे की लालच में, उस पौधे को पालने की खुशी में, उस पौधे को देखने की खुशी में बच्चा क्लासरूम में इंटरेस्ट शो करने लगता है. Are you understanding? Now I'm going to suggest you some ways of teaching different intelligent type people. These are some methods. You can get a screenshot of this. अगर आप linguistic बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, go for creative writing activities. Set up debates in the class. Give them speaking opportunities, public speaking. You add a joke or you add a little bit of humor in the class. Make sure there are plenty of reading opportunities. Because these are read-write children. They want to read, they want to write, they want to speak. So you have to create those spaces for the children. Don't make a class boring. You don't read, let the child read. You don't speak, let the children speak. So they will be fascinated by your class. Please stop annotation rights. I'll not give you annotation rights. Stop the request, please, Mr. Chandan Kumar. I think something has been pressed. Now let's come to the next. What about logical? Chandan ji, कुछ press हो गया है आपका keyboard में. देखिए, check करिए. I cannot give you annotation rights. Now next is logical mathematical children. इनके लिए क्या है? They always look for problem solving. तो आपके जीवन में, आपके क्लास में, आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में, आपके स्कूल में जो भी प्रॉब्लम होगा, give it to them. They will spend their time and they will use their brain in finding out a solution and they will be engaged. Involve them in calculations. For example, अगर हम हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं तो होते हैं ना, वो डेट्स होते हैं, ईरा होती है, उसके कैलकुलेशंस भी उनको आप समझा दो. इतना सा बीसी मतलब कितना साल हुआ जी, कितना साल पहले का बात है, कितना साल बाद का बात है, whatever. They love to do calculations. Create activities that involve deciphering a code. They're very good in computers because it talks about coding. Okay, they're good in computers. That is the reason. They use pattern or logic games. Okay, means if you teach them something in a pattern, देखो इसने ऐसा किया, फिर नेक्स्ट राजा आया, उसने ऐसा किया, पैटर्न हमारा क्या था, वो खुद ही आपको कह देगा, मैम उस राज्य का ये 3 चीज पैटर्न में था, अच्छा नेक्स्ट में हुआ वो पैटर्न फॉलो कि नहीं हुआ. Means you can use them for other subjects also. Okay, and they want bulleted formats. You know, they are not very good in text. So whenever you want to make them write something, give them some homework, make them prepare notes, they want bullet work. Bullet works helps them a lot.
Next, what about visual spatial children? They are very good in maps. They're very good in globe work. They're very good in guided visualizations. Imagine, जैसे हम कहते हैं ना क्लास में, imagine करो कि तुम सन के बिल्कुल पास हो और सन की रेज निकल रही है, तुम कैसा फील करोगे? अब वो तुरंत विजुअलाइज कर लेगा और आपको बहुत सारी बातें बता देगा. ठीक है? So create opportunities for them so that they can visualize. Give them some opportunity for artistic expression. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके क्लास का कॉर्नर आप विजुअल स्पेशल बच्चे को दे दीजिए, बेटा वो कॉर्नर बड़ा ब्लैंक लग रहा है, उसको थोड़ा डैम्पन हो गया, उसको जरा ठीक ठाक करो, मेक इट आर्टिस्टिक. So they want that. They want to live in a world of fantasy, visualization. So give them opportunities and they will decorate your class, your bulletin boards and everything. What about bodily kinesthetic people? Bodily kinesthetic people should be given the chance of acting. Role play में उनको बुलाइए, mime में बुलाइए, jump charades में बुलाइए, physical exercise करना, dance करना, martial arts करना, dramatics करना. They're very good in all this. So give them more and more and more opportunity to do all this in the classroom. What about musical children? Maybe they're not good singers. Again, I'm telling you, they're not good dancers, maybe, but they can appreciate and or criticize the music. So give them chance to play instruments, give them chance to take out different kinds of sounds in the class. For example, you're teaching them animals and their sound. अब animals and the sound पढ़ा रहे हो, तो फिर उनको बुलाइए, चलो take out the sound of lion, tiger, cat, dog, whatever it is. Are you getting my point? Maybe you are teaching संज्ञा सर्वनाम in the class. तो आप इन बच्चों को बुला सकते हैं, बेटा अभी जो मैंने तुमको संज्ञा के बारे में पढ़ाया हम लोगों ने, उसके बारे में एक गाना बनाओ, तो वो तुरंत आपको गाना बना कर दे देंगे और फिर गा के भी सुना देंगे. So that is how they learn. So please help these children do this in the class. What about interpersonal? Interpersonal children do a lot of good collaborative work, group work, because they're interpersonal. खूब बातचीत करना पसंद है, एक दूसरे को समझते हैं, empathetic है, understand the feelings of each other, so they can do very good group work. So provide them plenty of opportunity to do group work, and they're very good in communication. So in fact, interpersonal children can be made leaders so that they can communicate with each other. Okay. If you want to make a leader of a team, you can select such kind of people. But intrapersonal, actually, you don't have to do a lot for them. They are self-help group. They help themselves. But still in the class, if you really want to do a lot of work for them, allow them some time to talk to themselves. Like for example, आप एक क्लास में गए, आपके पहले किसी टीचर का पीरियड था, फिर आप गए, आप तुरंत कहते, come on children, take out your books and notebooks. No. Maybe when you go to the class, you can tell everybody, come on children, please close your eyes, take deep breath. Think about me, my next topic, which I'm going to teach you in the class. Now the child gets some time to meditate, some time to think. Are you getting my point? Next is, if you want children to speak about themselves. For example, आपने group activity की class में और फिर आप feedback लेना चाहते हो, तो आप इनको मौका दीजिए. Because they're reflective practitioners, वो बार बार reflect करते हैं, अपनी reflection करते हैं और सोचते हैं और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और मैं कैसे अच्छा कर सकता हूँ, ये कैसे अच्छा हो सकता है, तो वो आपको बहुत अच्छा feedback दे सकते हैं. ठीक है? Next is my naturalist. Like I always told you, you can give them a chance to take care of a plant or animal. You can take them to the garden. You can take them for nature walks. You can ask them to do some work. Like पूरे स्कूल में जितने भी plants हैं उनका नाम पता करके आओ. Whatever. So you know, one small plant. Suppose you take a flower to the class. You have a flower vase. उसमें flower रखना है. They will be very happy. Are you understanding? So naturalist children को आपको nature से connect करके पढ़ाना होगा. चाहे आप nature को class में ले आओ या आप उनको class में ले जाओ. So some suggested activities, you can take a very big, wonderful screenshot of this. This is going to be very helpful for you. कि verbal linguistic को कैसे पढ़ाना है and all this. You can take a screenshot. Whatever I've discussed just now, I've written it in a tabular format so that if one screenshot you take, it will be with you. Okay. Now the next one is, okay. So what in the school? The school should also have the classroom layout or the school layout should also support this. Are you getting my point? So the layout of the classroom, like for linguistic children, you should have a quiet reading area. Like in my previous school, you know what I did? I prepared some learning corners. Now a linguistic child wants to read, wants to write. तो आप एक कॉर्नर में कुछ बुक्स रख सकते हैं, कुछ राइटिंग मटेरियल रख सकते हैं, कुछ पेन पेंसिल रख सकते हैं, कुछ कलर्स रख सकते हैं, जहां लिंग्विस्टिक बच्चा जाकर पढ़े.
जब मान लीजिए उसका काम खत्म हो गया क्लास में, वो बोर फील कर रहा है, टीचर नहीं आया, तो उस कॉर्नर में जाकर अपना टाइम इन्वेस्ट करें. दिस इज हाउ द चाइल्ड गेट्स अटैच्ड टू द क्लासरूम आल्सो. नेक्स्ट, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के लिए आप एक पजल कॉर्नर बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कॉर्नर बना सकते हैं, कहीं भी क्लास में भी बना सकते हैं. क्लास में नहीं जगह है तो आप स्कूल में कहीं बना सकते हैं. लंच ब्रेक में मान लीजिए उस बच्चे ने लंच कर लिया, 5 मिनट समय है उसके पास, वो उस कॉर्नर में जाकर ये क्या होती है, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये हमारी अंदर की एक इच्छा होती है जिसको हम फुलफिल करते हैं उस कॉर्नर में जाकर. क्योंकि अंदर से तो मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल अंदर से मैं एक लॉजिकल इंसान हूं, लेकिन सुबह से हिंदी पीरियड हुआ, फिर इंग्लिश पीरियड हुआ, फिर पीएचई हो गया, मेरे को मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं तो लॉजिकल हूं, मुझे तो कुछ मैथ साइंस नंबर्स चाहिए. तो मे भी लंच ब्रेक में मैं उस कॉर्नर में चला गया, कुछ पजल सॉल्व कर लिया, मेरे को शांति मिल गई. मेरे अंदर का जो थर्स्ट था एज अ स्टूडेंट, दैट थर्स्ट इज क्वेंच्ड. Are you getting my point? So you must have these corners either in your class or in your school or in your corridors for such children. Create a corner where the children can play chess so that that logical analysis thing is fulfilled. Then you can have a corner where children can conduct some scientific experiments. Visual intelligence children need open space for manipulations. Bench को ऐसे घुमा दो, उसको वैसे रख दो, उसको ऐसे कलर कर दो, उसको ऐसे सजा दो. बॉडी काइनेस्थेटिक चिल्ड्रन आल्सो नीड ओपन एरिया, क्योंकि उनको चलना है, उनको अपनी बॉडी की तिकड़मबाजी दिखानी है सबको. तो उनके लिए क्लास में ना कुछ खुला खुला जगह होना चाहिए जहां पे आकर वो कुछ कर सकते हैं. ठीक है. म्यूजिकल इंटेलिजेंस चिल्ड्रन के लिए म्यूजिक लिसनिंग हो सकती है, क्रिएशन हो सकता है, headphones हो सकते हैं, if your school permits, if your system permits, I don't know. And naturalist children will always want to go out. Either you can keep a plant in the class, or you can make a terrarium in the class, or you can have an aquarium in the school, where maybe these children can be allowed to come to the lunch break and at least watch the fishes, watch the turtle. So they will enjoy and they will love. And for interpersonal intelligence children, you need spaces in your class where you can do group work. Whether tables are there or not, मैंने क्या किया था, मैंने हर क्लास में 2-2 चटाई दे दिया था, और चटाई बिछाओ और ग्रुप वर्क वहां पे कर सकते हो. अगर टीचर को ग्रुप वर्क करना होता था तो मैं उन बच्चों को वहां बुलाकर बैठाकर ग्रुप वर्क कराती थी, बिकॉज इट वाज नॉट पॉसिबल कि उसी क्लास के अंदर अलग से टेबल्स लेड आउट हो और बच्चा काम करे. बट देयर वाज समथिंग फॉर एवरीबॉडी इन द क्लास, so that no child would say कि मुझे तो स्कूल जाने का मन ही नहीं करता, मेरे क्लास में तो कुछ मेरे लायक है ही नहीं, मुझे तो टीचर पसंद ही नहीं करती, मेरे रिक्वायरमेंट्स के ख्याल नहीं रखते. ये नहीं होना चाहिए. Are you getting my point, what I'm trying to say? Okay, so please understand that multiple intelligence theory is implemented properly in the classroom. It can have very positive results. Students will have increased sense of responsibility, self-direction, independence, discipline problems are reduced because they are doing some work all the time. They're engaged. So discipline problems will be reduced. And students develop and apply new skills, cooperative learning increases, and overall academic achievement increases. After all, हमारा problem क्या था कि बच्चा उस subject में poor performer है, लेकिन अगर उसको उसके intelligence type से हम पढ़ाते हैं तो definitely he will understand more, he will learn more, he will be happier, he or she will be engaged, learn new skills. इससे धीरे धीरे उसका academic graph will also improve. Okay. So first, you must understand the multiple intelligence theory and know which intelligence your students have. For that, I've already told you a test. And then accordingly, just say, in my school, what I do is I form groups. Same type of intelligent people will form groups. Or you can make a group in which every type of intelligence person is there. So that when you're doing a group activity, आपको बहुत type के intelligent लोग एक साथ मिलकर एक अच्छा productive कुछ कर सके. ठीक है? Either way you wish to do, but you must focus on multiple intelligences and make sure that everybody is learning. Okay, not only one type of intelligent people are learning in your school, everybody is learning. That's all from my side. Thank you so much. Now over to you all for some questions if you have any. Thank you. Over to you, dear educators. If you have some questions, if I've been able to get to you, I don't know how successful I've been, but of course, your questions are most welcome. Participants may ask questions.
Ma'am, Please. He's asking for existential intelligence. yes. You know, if you try to talk in very simple form, then please understand that intrapersonal children who dive deep within them, they are a type of existential intelligence people. Like I told you in the beginning itself, that there are many types of intelligences. These 8 are the broad categories. अब इसको भी हम लोग छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस आएंगे. लेकिन ये जो आपके एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है वो है सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू डाइव डीप अबाउट योरसेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, ह्यूमन एग्जिस्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक पढ़ा रहे हो क्लास में, और जब आप उस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तब आपको लगता है ये टॉपिक कहाँ से आया, इस टॉपिक को कैसे इजाद हुई, इस टॉपिक में हम क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक में हम कितना पढ़ सकते हैं, ये टॉपिक सही है मैम क्यों पढ़ा रहे हैं, इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे. सो यू नो दे आर डीप डाइव थिंकर्स. ओके, दे गो इनटू द existence of everything. They want to know that. So this is that kind of intelligence. They are more or less, you can say, इस type of intelligent people को हम लोग intrapersonal intelligence में रख सकते हैं. ठीक है? Any more questions? Any more? Simple ma'am, you're there? Yes, sir. It was a wonderful session and you all have participated through the chat box wonderfully. Thank you so much once again. I'm very happy to interact with such a vibrant group of educators. Thank you once again. Thank you so much, ma'am. Simple ma'am, please conclude. Yes, sir. Good evening once again, ma'am. Thank you so much, Mitali ma'am, for sharing your ideas and knowledge on this wonderful topic. I think many of us were not aware about different types of multiple intelligence. The way you have explained, and I think from today our educators um, uh, will be confident and maybe must be updated to how to make a lesson plan, how to update their traditional teaching. So thank you so much, ma'am, for explaining such a wonderful topic in a very nice way. Thank you so much. Thank you, CB Singh sir, founder of Aryavat Sahodaya. Thank you, Radhika ma'am, president of Aryavat Sahodaya. Thank you, Himanshu sir, training coordinator, who is very much involved for completing the 25 hours of our trainings of different schools. So thank you so much, sir. Thank you, everyone. Thank you. So, Thank you, ma'am. thank you, ma'am. Thank you both the ma'ams. And now for the participants, we have already shared the link and requesting you to kindly see your feedback attendance by around 6:20. Yeah. So please do it within time. Thank you so much. Thank you, Mitali ma'am. Now you can leave.